अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ेशान है और मेरे ग्रुप मेंबर का नाम अबूबकर है। हम NUST CEME से हैं, डिग्री 42, और आज हम ट्राइबोइलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बताएंगे और उसको बनाएंगे भी। पहले हम बात करते हैं कि ये ट्राइबोइलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। ट्राइबोइलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग जो सर्विसेज होती है ना, जिन पे हम रब या कोई फोर्स लगाने से उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उनको यूज़ करते हुए उसका फ्लो बनाते हैं और उस फ्लो से हम एनर्जी हासिल करते हैं। बेसिकली हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में ना बहुत सारी मशीन जो एनर्जी होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी, उनको यूज़ करने के लिए जो ज़ाया हो रही है, जो हम यूज़ नहीं कर रहे, उनको यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ना ये गाड़ी है, हम गाड़ी रोड पे चला रहे हैं, इसकी फ्रिक्शन बन रही है रोड से, और इसकी फ्रिक्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं ट्राइबोइलेक्ट्रिक जनरेटर से। अब हम उसको बनाएंगे और उसके जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो मेरे ग्रुप में बताएंगे आपको, और अंदर चल के बात। अच्छा, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है एल्यूमिनियम फॉइल। इसके अलावा हम जो यूज़ करेंगे वो होगी एक टेप होगी, कुछ वायर है, एक पेपर होगा और DMM होगा, और इसके अलावा हम एक यूज़ करेंगे LED, जिससे हम आउटपुट को देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने कंपोनेंट्स। So now we are going to make a triboelectric generator. We need a paper, and I have some aluminum foil, a breadboard, and couple of wires in which there are alligator wires and glue stick and tape. And we also need a LEDs to check our output, and we have some DMMs so we can check our output voltage. So let's make it. So here we have taken 2 aluminum foil papers, cut it down. Now we will paste it on the page with the help of tape on the edges like this. So I have connected some tapes on the border. If my partner Abubakar can show you that I have stick it with the tapes. So now I'll bend it from a border like this. So I have connected alligator wires with the DMM, and I'll turn on this DMM to AC. Since this generator will give an output of AC voltage, so we'll measure it in the DMM AC no. So we need to rub on this surface so that some charges will be gained on the aluminum foil and we will get it on the output. So I have a plastic cover here of phone, which I will rub on this. So I need a plastic filming on that, and I'll use a shopper. Here I have. So let's do it. So now I'll rub it on the paper, and I'll get the voltage on the output DMM. So let's do it. When I rub it on I am getting a voltage. My cameraman can show that we are getting a voltage. Since it's an AC voltage, so I will connect a diode on the breadboard and make a schematic so that we can turn on an LED from it.
connected my LED and in series with the diode. So I have made a small half wave rectifier here, and I am providing an source from this small prototype of Triboelectric Generator, and let's test this. आपने देखा कि हमने एक एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करके एक ट्राइबोइलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया और एक अच्छी वोल्टेज आई। उसके बाद उन्होंने एलईडी भी उसको क्लीन करवाई साथ, और एलईडी सही ब्लिंक नहीं हुई क्योंकि वो एसी वेव आता है इससे, और वो हमने कोशिश की थी कि रेक्टिफायर यूज़ कर सके, क्योंकि एक डायोड होता है वो 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होता है, इसलिए एलईडी अच्छी ब्लिंक नहीं की। बट अगर हम उनको बड़े करेंगे, पैमाने पे काम करेंगे इस पर, तो अच्छा आउटपुट आ सकता है। एंड सेकेंडली इसके ये वर्क किस तरह कर रहा है, जिस तरह हम एक बालून अपने सर पे रगड़ते हैं ना, और वो एक स्टैटिक फोर्सेस बना लेता है, इसी तरह इसकी स्टैटिक फोर्सेस बननी है उसको रब करने से। एंड दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।